गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ेंगे। Kinds of the noun. Kinds of the noun. Kinds of the noun. Kinds of the noun. फर्स्ट है, पहला काइंड है इसका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन फर्स्ट काइंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफाइन लिखेंगे हम लोग। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of a proper noun is the name of a particular name of a particular name of a particular person a proper noun is the name of a particular person, animal place or thing a proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. एग्जाम्पल लिखेंगे, राम पटना। सेकेंड नंबर काइंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे हम लोग। अ कॉमन नाउन इज द नेम अ कॉमन noun is a name. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing. एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे,
गर्ल इट इज शी, बॉय गर्ल इट इज शी। थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन collective noun, collective noun लिखेंगे अब collective noun। अब collective noun, अब collective noun a collective noun is a name, is the name, is the name, is the name of, is the name of a number of, a number of, the name of a number of, a collective noun is the name of a number of persons of a number of persons or things, persons or things taken together, taken together, taken together and taken together and taken together and spoken, taken together and spoken of as one whole, taken together and spoken of as one whole, taken together and spoken of as one whole। एग्जाम्पल लिखेंगे क्लास, आर्मी, एडिशन। Collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। एग्जाम्पल लिखेंगे क्लास, आर्मी, एडिशन। फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन लिखेंगे मटेरियल नाउन material noun is the name of a name of a material substance, name of a material substance, name of a material substance। A material noun is the name of a material substance। एग्जाम्पल लिखेंगे
एग्जाम्पल लिखेंगे वाटर, ऑयल, ETC, वाटर, ऑयल, ETC। फिर नंबर लिखेंगे abstract noun। फिफ्थ नंबर है abstract noun। फिफ्थ नंबर पॉइंट है abstract noun। लिखेंगे abstract noun। लिखेंगे an abstract noun, an abstract noun, an abstract noun is the name of an abstract noun is the name of some quality, state, feeling, an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch, but cannot see or touch। एग्जाम्पल लिखेंगे goodness, kindness, ETC। goodness, kindness, ETC। आप सुंदर राइटिंग में नोट कर लेना है, सभी को याद भी करना है। आपका मंथली एग्ज़ाम नहीं हुआ है,
2 पेपर का, ठीक है ना। इसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, सभी को याद भी करना है, ठीक है ना। लिखना है और याद करना। ओके, बाय, गुड नाइट।